Hello, everyone. We are going to discuss a very important topic today, that is labor force participation rate, unemployment rate, and current record of the periodic labor force survey. First, we'll discuss that what are the current reports of the periodic labor force survey. Then we come into the technical definitions of this labor force participation rates, unemployment rates, and then we go into the depth about what is unemployment and what are the different types of unemployment, and what is the impact or what are the impacts of the unemployment, and what are the government policies to deal with it. And finally, we'll conclude with some way forward. So let's start today's class. So ये जो है periodic labor force survey, PLFS. What is the objective of this periodic labor force survey? The objective of PLFS is primarily twofold. First, to estimate the key employment and unemployment indicators. As for example, this worker population ratio, labor force participation rate, unemployment rate in the short time interval of 3 months for the urban areas only in the current weekly status. So पहला जो objective है, मतलब first, because this the objective is twofold. The first one is to find out or estimate this key employment and unemployment indicators. और वो क्या क्या है आपका worker population ratio, labor force participation rate, and unemployment rate. And they are actually trying to find out within a short time interval of 3 months for the urban areas. Then the periodic labor force survey annual report for 2022-23 just released. That's why we are discussing today these things. And it focuses on key unemployment or employment and unemployment indicators. And the survey's key findings are kya finding mila. First, we'll, as I have said, that first we discuss the technical term, then we go into the details. So what the first technical term is that labor force participation rate. So labor force participation rate kya hai? Shortly, LFPR. You can see in this diagram, labor force participation rate is equal to labor force divided by working age population. ठीक है, so 15 से 60 years, that is the working age population, और labor force मतलब जो अभी कुछ ना कुछ labor में involved है, right? So the labor force participation rate is a measure of the proportion of a country's working age population that is actively engaged in the labor markets. An increasing trend in the LFPR, that is labor force participation rate for person aged 15 years and above, was in rural areas. It is found that LFPR increased from 50.7% in 2017-18 to 60.8% in 2022-23. Urban areas, it is increased from 47.6 to 50.4%. And for males, especially means labor force participation rate for males in India, it increased from 75.8% to 78.5%. And the duration we are taking 17-18 to current 2022-23. Then for females also, this rate increased from 23.3% to 37.0%. तो ये जो LFPR रेट है, तो फॉर एनी केस, फॉर मीन्स एनी केस इन द सेंस रूरल एरियाज का हो या तो अर्बन एरियाज का हो या तो मेल्सर कारण होक बा फीमेल्सर कारण होक, इन एवरी केस वी हैव सीन एन इंक्रीज. So that is a kind of positive signs because more people are coming forward for some kind of walking activities. Then worker population ratio, that is again a next technical term. Shortly, we call it as WPR. Okay. So what is worker population ratio? Worker means all person who do economic activities and contribute to GNP. And population means total number of people who reside in a particular locality at a particular period of time. And the ratio of these two, that is worker divided by population, gives us the what? Worker population ratio. So, Abhi, I want to
asks you a question that whether the housewives, although in the Supreme Court, in its recent police book, that these terms should not we should not use for this, but still I'm asking one question, that whether the housewives fall under worker category or not. If you know the answer, you can comment. Now, ये क्या है आपका worker population ratio is number of workers divided by total population. Now, the worker population ratio, WPR, is the ratio of a country's working population to its population multiplied by 100, क्योंकि हमने इसको परसेंटेज में निकाला है, तो इसलिए क्या मल्टीप्लाई किया 100. Now, इसका जो आपका रिपोर्ट आया है, what are the reports we have got for WPR is that in rural areas, it is increased from 48.1% to 59.4%. Remember, we are taking the same duration, that is 2017-18 to 2022-23. Then urban areas, it increased from 43.9% to 47.7%, and in case of male, 71.2% to 76.0%, and in case of females, 22.0% to 35.9%. So here also we can see an increase in the worker population ratio. Both in all cases, rural areas हो गया या तो urban areas हो गया या तो males के लिए हो या तो females के लिए. याद रखना, हम जो भी आंसर लिखते थे तो we used to write like that current our means women's participation rate, or you can say the women's workers participation rate is 22.0%, but now it is changed, it is now 35.9%. So that is a good sign, right? More women are coming forward to work. Then now the next thing is that unemployment rate, UR. So unemployment rate क्या है? This is the proportion of the labor force that is not currently employed. मतलब उसमें से कोई भी economic activities, मतलब उनका economic contribution कुछ नहीं है. ठीक है? The unemployment rate is the percentage of unemployed workers in the total labor force. The labor force includes all people who are employed or unemployed. But the unemployed rate is calculated by dividing the number of unemployed people by total labor force. याद रखना, labor force जो काम कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, but labor force में दोनों आ जाते हैं आपका, employed and unemployed. But in the case of this unemployed rate, इसमें हम क्या करेंगे, जो unemployed है divided by total labor force, ठीक है, तो हमें तब मिल जाएगा अनएम्प्लॉयड रेट. और इसका जो रेकॉर्ड है, यार रेकॉर्ड खिनि এনেকুৱা ধৰণৰ যে in rural areas unemployment rate increase, decrease, and really sorry, in rural areas it decreased from 5.3% to 2.4%. Again the duration is 17-18 to 22-23. तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपका जो unemployment rate है वो decrease हो रहा है, मतलब more and more people are coming for or are involving in some employment activities, right? Similarly, in urban areas, your unemployment rate decreased from 7.7% to 5.4%. Then for males, it decreased from 6.1% to 3.3%, and for female, it decreased from 5.6% to 2.9%. So overall ये जो रिकॉर्ड हमें मिला है, इन सब में हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि everyone is now either willing to do some work or working somewhere or already involved in some kind of working activities. तो हमारा जो नेक्स्ट टेक्निकल टर्म है जिसको हमें कंप्लीटली जानना है वो है अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट माने की, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट occurs when a person who is actively searches for employment is unable to find a work. Suppose मैं कुछ काम करना चाहता हूं, I have some skills with me, I'm searching for job, but मुझे जॉब मिल नहीं रही है, तो I will be called an unemployed. So again, I'm repeating the definition. Unemployment occurs when a person who is actively searching for employment unable to find work is unable to find work.
And unemployment is often used as a measure of the health of the economy. The most frequent measure of unemployment is the unemployment rate, which is the number of unemployed people divided by the number of people in the labor force. अभी अभी हमने इस जिसका जो रिकॉर्ड है वो हमने देखा, अभी कुछ समय पहले हमने क्या किया था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है डिफाइन किया और उसका रिकॉर्ड भी हमने जान लिया था, ठीक है। और ये एक one kind of improvement, you can say that unemployment rate decrease हो रहा है. Now, National Sample Survey Organization, NSSO, defines employment and unemployment on the following activity statuses of an individual. तो NSSO के मुताबिक कुछ definition है, like working, that is employed, seeking or available for work, that is unemployed, neither seeking nor available for work. इसके लिए हम कुछ ये नहीं कर रहे. That's the first to constitute the labor force, मतलब employed and unemployed. And the unemployment rate is the percentage of the labor force that is without work. ठीक है, आप इस केस में, ये थर्ड वाला केस में देखो, आप नहीं आप कोई वर्क कर रहे हो या तो आप वर्क करना भी नहीं चाहते हो, तो वो केस अलग है. उसमें आपको अनएम्प्लॉयड भी हम नहीं कह सकते. अनएम्प्लॉयड तब कहेंगे जब आप कुछ करना चाहते हो बट आपको कुछ जॉब मिल नहीं रही है, राइट. কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে, আপোনাৰ ওচৰত স্কিল আছে, আপুনি জব সাৰ্চ কৰি আছে কিন্তু আপুনি জব পোৱা নাই, দ্যাট ইজ আনএমপ্লয়ড. কিন্তু কিছুমান এনেকুৱাও থাকে যি জব কৰিবও নিবিচাৰে বা কিন্তু লগতে মানে কোনো ধৰণৰ এক্টিভিটিটো ইনভলভ নাথাকে, নিবিচাৰেও আৰু কৰিও থকা নাই, राइट. ओके, ये हो गया. तो इसमें मैं एक चीज बोलूंगा कि जो वर्किंग ये आपका हाउसवाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, हाउसवाइफ कब तक एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड कहेगा, मतलब व्हेन वी विल कॉल देम एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, काइंडली लुक इनटू इट एंड थ्रो द कमेंट. सो as your analytical ability means आप क्या जानते हो, आप क्या एनालिसिस करना चाहते हो इस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर, यू कैन कमेंट मी. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है, मे बी आस्क्ड इन द एपीएससी इंटरव्यू आल्सो, so don't forget to answer it. Okay, then unemployment rate, you got it, that unemployed worker divided by total labor force into 100. Now we have to know that what are the different types of unemployment. तो पहला जो टाइप है open unemployment. This occurs when a significant portion of the labor force is unable to find a position that may provide them with a stable source of income. The labor force is growing bigger than the pace of economic expansion. Therefore, not everyone finds employment. Population बढ़ रहा है या तो labor force बढ़ रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक एक्सपांशन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो हर किसी को तो जॉब मिलेंगे नहीं, right? So in such cases, we call it as an open unemployment. Then disguised unemployment, जितना मतलब क्या होता है इसमें, more individuals are working than is truly necessary. Suppose कोई एक particular case में, तो disguised unemployment, in this case we can cite the example that suppose in an agricultural field, only 4 means workers are needed or 4 farmers are needed, but instead of 4, suppose 8 are working there. So what happens? But we are getting the same output. So in such cases, those 4 are not needed, right? So that is a kind of, or that is an example of disguised unemployment. It is also known as overcrowding in agriculture. Now, next thing is the seasonal unemployment. This means what? The production activities happen during certain seasons in several sectors and professions, like in agriculture. You know, we have suppose 2 seasons, but what happens in between them? मीन्स 2 सीजन है, 2 सीजन में कुछ आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रहा है और इसके कारण कुछ कुछ लोग वहां पे एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड इन द सेंस कुछ एक्टिविटीज में वो लोग इंक्लूड है और जिसके कारण उनका कुछ इकोनॉमिक जो भी है वो उनको मिल रहा है, राइट. दे आर एंगेज इन देयर. बट जो 2 सीजन है उसके बीच जो
समय है, they are not involving any work, so that particular, that is, they are unemployed, so that particular unemployment is known as seasonal unemployment. इस टाइप से आपका है vulnerable unemployment, means those people who work informally without adequate job contracts or other legal protection. They are said to be vulnerable vulnerable employment, in the sense that no records of the employment are ever kept, so these people are considered to be unemployed. It is one of the primary categories of unemployment in India. ठीक है, क्या होता है, कुछ कुछ लोग जो इस टाइप के कुछ जॉब में इन्वॉल्व है जिसमें कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं, या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ साइन नहीं हुआ है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है उनको जॉब, मतलब जो भी जॉब कर रहे हैं वो लोग जिसका कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, तो उनको जॉब से निकाला भी जा सकता है, या तो कुछ कारण उन लोगों को पैसा नहीं मिला है। तो इस टाइप के जो जॉब्स हैं इसको हम बोलते हैं वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट, और ये एक प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। एंड इसको भी हम प्राइमरी कैटेगरी में रखते हैं इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट के स्टेटस में, ठीक है। दैट इज वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, दोज हु आर इंक्लूडिंग हु आर एंगेजिंग इन सम जॉब who does not have any legal protection. Then structural unemployment, इसमें क्या होता है, unable to get a job due to lack of required skills or poor educational level or lack of advancement. Suppose कोई एक कंपनी में AI का कुछ स्किल चाहिए, सपोज कंप्यूटर विजन, और आप में वो चीज नहीं है, बट आप उसके लिए अप्लाई किए थे, आपको मिला नहीं। या तो कोई कोई लोग जिसको जिन्होंने सपोज 4 इयर्स का कुछ डिग्री भी कर लिया है, बीई कर लिया है, कुछ भी इस टाइप का डिग्री कोर्स कर लिया है, बट स्टिल उनके पास वो स्किल नहीं है जिस स्किल की जरूरत है कोई पार्टिकुलर जॉब के लिए, तो फिर इसलिए उन लोगों को मिल नहीं रहा है जॉब। तो इस टाइप के जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स जॉब अनेबल टू गेट अ जॉब ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल, ठीक है। देन नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट क्या है, रुको, स्ट्रक्चरल हो गया। देन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, it is brought on by trade cycles which happen periodically. Typically trade cycles are a feature of capitalist economies. Unemployment is caused by a decline in business activity and it is a short run situation. मतलब क्या है, कोई बिजनेस एक्टिविटीज में डिक्लाइन होने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, या तो कोई ट्रेड साइकिल में, ट्रेड साइकिल समझ रहे हो ना, कुछ भी आपका ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज में क्या हो गया, आपका डिक्लाइन हो गया है, ट्रेड नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। And this, the figure of cyclical unemployment in India is almost negligible. Then technological unemployment, it is the outcome of some technological advancement in production method which could not need a lot of labor because it is capital intensive. Modern technology uses fewer workers and that leads to this type of unemployment. And in 2016 World Bank data said that year by year the proportion of jobs threatened by automation in India is 69%. अभी तक समझ में आ गया होगा आप लोगों के टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट माने কি। সাপোজ কিছুমান নতুন টেকনলজি আহিছে, AI বেসড টেকনলজি, কিন্তু তাৰ বাবে কি হল, যিমান সাপোজ উই নিড 100 laborers before, but because of that technological upgradation, we don't need such amount of laborers now. We need suppose 40 laborers. So there's a cut of 60 laborers of, yes or no? Because of those technological advancement, or you can say upgradation, or because of automation. ठीक है, तो इस कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मींस व्हाट, this sort of unemployment is brought on by labor force inactivity, a lack of accurate and timely information, and seasonal nature of employment. That is, it is also called surge unemployment. It is sometimes considered voluntary unemployment because it is not caused because of any shortage of job है, but आपको वो information नहीं मिल रहा है, या तो the worker themselves either quit or choose not to get jobs at a point in search of better opportunity. आपने जॉब छोड़ के कोई और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रहे हैं, तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
देन एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? इन एडिशन टू ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मेनी एडुकेटेड पीपल आर अनएम्प्लॉयमेंट सिंस देयर क्वालिफिकेशन डू नॉट फिट द पोजीशन. द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग educated young people in India are the country's flawed educational system, mass production, desire for white collar job, lack of employable skills, a decline in the regular salaried employment. जहां तहां डिग्री प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो डिग्री में सच में स्किल्स इंक्लूड किया गया है? क्या वो डिग्री का उतना ही स्किल वैल्यू है? तो बट वो डिग्री में जो लोग पास हुआ है वो तो अपना जो हिस्सा है कि इस टाइप का जॉब चाहिए, व्हाइट कलर का जॉब चाहिए, उसके कारण वो अनएम्प्लॉयड होके क्या सर्च कर रहे हैं? इस टाइप का व्हाइट कलर जॉब. तो ये जो जॉब्स है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको हम बोलते हैं एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. क्यों? क्योंकि आपका जो हमारा जो कंट्री का फ्लॉट एजुकेशनल सिस्टम के कारण इतने नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रेजुएशन हो रहा है या तो हायर एजुकेशन लेके बैठे हैं लोग, जिसमें स्किल्स की कमी हो या तो कुछ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है. तो इस टाइप के जो अनएम्प्लॉयमेंट है हम इसको बोलते हैं एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. और व्हाइट कलर जॉब मतलब क्या होता है? एम्प्लॉइज हु वर्क इन ऑफिसेस डू नॉट परफॉर्म मैनुअल लेबर. मेरे पास ये डिग्री है, मैं क्यों इस टाइप का जॉब करूं? मुझे तो इस टाइप का ऑफिसर्स वाला जॉब चाहिए. तो इस टाइप के जॉब को हम बोलते हैं क्या? एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. इसके ऊपर इस बार का एपीएससी में এটা কুৱেশ্যনো সুধিছিল, আপোনালোকে চাব. One question being already asked in APSC mains examination related to this what educated unemployment and how NEP means new education policy can deal with this issue. Then underemployment क्या है? People who are employed in a circumstances where they are not contributing as much they could. In such a situation, people take up a position that needs less educational qualification. That means people are unable to untap their potential and settle for lesser work because of lack of employment opportunities. और ये really unfortunate है कि इंडिया में ऐसा हो रहा है. इंडिया में एक डॉक्टरेट भी, एक पीएचडी वाला इंसान भी, उनको एक लेसर, जिसमें एक लेसर मतलब कोई भी जॉब को कम या तो बड़ा तो नहीं बोलना चाहिए, बट उनका जो पोटेंशियल था उस पोटेंशियल के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल रहा है. उनको कम पोटेंशियल या तो वो कम स्किल वाला जॉब भी करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा कुछ उस टाइप के क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो जॉब होना चाहिए नहीं मिल पा रहे हैं. इसलिए दोस्त दे आर नॉट गेटिंग और दे आर अनेबल टू अनटैप देयर पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं हम अंडर एम्प्लॉयमेंट. बिहार में ऐसा बहुत बार देखा गया है, जो बिहार बहुत केस में हुआ है. मैं सबका बात नहीं करूंगा, जिन्होंने रिसर्च अच्छे से किया है, बात करने के बावजूद भी उनको जैसा जॉब मिलना चाहिए था ऐसा नहीं मिल रहा है. सपोज मास्टर डिग्री किया है, बट मास्टर डिग्री के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल रहा है, उनको हायर सेकेंडरी वाला या तो ग्रेजुएशन वाला जॉब करना पड़ रहा है. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक persistent unemployment over an extended period of time, and reason is for long term unemployment are population expansion that is out of control and an inadequate degree of economic development as a result of poverty's vicious cycle. तो एक लंबे समय के लिए आपका जब पॉपुलेशन एक्सपांशन हुआ है तो क्या होगा? एक अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट. लंबे समय के लिए पॉपुलेशन एक्सपांशन मतलब पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहे हैं, बट उसके हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है. इसको बोलते हैं हम क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट. कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट कैन हैपन व्हेन ए पर्सन इज नॉट रेगुलरली और डे टू डे बेसिस एम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट. कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो बाकी समय अनएम्प्लॉयड रहेगा, या लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स और ए डिक्लाइन इन डिमांड और ए चेंज इन ओनरशिप. और इम्पैक्ट क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट का? इम्पैक्ट जो है आइदर साइकोलॉजिकल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, सोशल हो सकता है, कॉपिंग रिसोर्सेज, ये सारे चीज हो सकता है. सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये आप लोग देख लेना साइकोलॉजिकल में क्या क्या आ रहा है. आइडेंटिटी, वर्थलेसनेस, पावरलेसनेस, स्ट्रेस लेवल बढ़ के सुसाइड का भी इंफॉर्मेशन आते हैं. ठीक है. देन साइकोलॉजिकल में सेम एंड एम्बेरसमेंट का भी इशू है. सोशल में कंपैरिजन होता है कि ये ऐसा जॉब कर रहा है, तुमको क्यों नहीं मिल रहा है. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, ये सब भी होता है. आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग, ये सब होता है. और बहुत समय में हमको ये भी देखने को मिलता है कि मेनी पीपल एंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. एंड ऑल्सो पीपल्स कैन बी इजीली अनएम्प्लॉयड यूथ्स कैन बी इजीली ल्यूर्ड टुवर्ड्स द इंसर्जन एक्टिविटीज. तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा प्रॉब्लम है. एंड गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइंग टू डील विद एड्रेस दिस प्रॉब्लम विद सम इनिशिएटिव्स. Like India, we have national rural employment programs
rural landless employment guarantee program, integrated rural development program, foods for work program, training rural youth for self-employment, operation flow to देन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये सारे स्कीम्स इंडिया ने लिया है। और आप इसके अलावा भी अभी करंट जो है, जैसे आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री, देखो कौशल मतलब स्किल को विकास करने के लिए गवर्नमेंट उसमें वो फोकस कर रहा है, ताकि अमर्त्य सेन का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, हमें सिर्फ पैसा देने से नहीं होगा, हमें शॉर्ट टर्म मेजर देने से नहीं होगा, लॉन्ग टर्म मेजर के लिए ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड फॉर टू वर्क ऑन द लॉन्ग टर्म मेजर वी हैव टू work on capability developing or capability building approach. That is the approach of Amartya Sen, and our government is currently focusing on this, means increasing the skills for capability building for different scheme like Deen Dayal Upadhyay Gram Kaushal Yojana, basically this one, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, then Ayushman Bharat scheme, then Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana, and recent activities like support for marginalized individuals for livelihood and enterprises, SMILE program, then PM DAX, that is Pradhan Mantri Dakshata or Kushalta Sampan Hitagrahi, that is PM DAX, then Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, ये recent activities हैं, ठीक है। देन वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि प्रोमोटिंग लेबर इंटर्नशिप इंडस्ट्रीज, देयर आर ए नंबर ऑफ लेबर इंटर्नशिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इन इंडिया सच एज फूड प्रोसेसिंग, लेदर एंड फुटवेयर, वुड मैन्युफैक्चरर्स एंड फर्निचर्स, टेक्सटाइल्स एंड अपीयर्स एंड गारमेंट्स। देन समझ में आ रहा है ना, हमें लेबर इंटर्नशिप इंडस्ट्रीज जितने भी हैं उनको ज्यादा फोकस कराना पड़ेगा, ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मोर नंबर ऑफ लेबर्स का जरूरत हो और more people can engage in such employment activities. Then decentralization of industries, मतलब कोई एक जगह में, सपोज कलकत्ता में ही हो रहा है, ऐसा नहीं, सारे इंडिया के हर एक रीजन में इंडस्ट्रीज को डेवलप कराना है, डिसेंट्रलाइज कराना है, कि सभी रीजन के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, राइट, सिर्फ दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे में ही नहीं, सभी जगह में का लोगों को मिले, राइट। देन कॉन्क्रीट मेजर्स एम्ड एट रिमूविंग द सोशल बैरियर्स फॉर वुमेन्स एंट्री एंड देयर कंटिन्यूअस पार्टिसिपेशन इन द जॉब मार्केट इज नीडेड। अभी जो हमें रिपोर्ट के मुताबिक हमें क्या मिल रहा है, वुमेन एंट्री ज्यादा हो रहा है, और ये होना चाहिए, और इसको और बढ़ाना है, सिर्फ 34%, 30% इसमें लिमिट नहीं रख के इसको और बढ़ाना है। और उसके लिए जो भी सोशल बैरियर है, सपोज एक हाइजेनिक कंडीशन चाहिए वुमेन्स के लिए काम करने के लिए, राइट, सपोज वी नीड हाइजेनिक टॉयलेट्स फॉर women workers, we have to provide such facilities, we have to provide protection, safeties, so that more number of women come forward for working participation, right? We need to remove those social barriers for women. Patriarchal जो behavior है, वो patriarchal जो nature है, उसको हटाना होगा, तभी ज्यादा number of women entry होगा, और तभी ये unemployment का जो situation है ये reduce होगा। Then drafting national employment policy, there is a need for national employment policy, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसी तरह नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी चाहिए, दैट वुड encompass a set of multi-dimensional intervention covering a whole range of social and economic issues affecting many policy spheres and not just the areas of labor and employment. तो मल्टी डायमेंशनल इंटरवेंशन को लेके हमें नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाना चाहिए, ताकि जितने भी अलग अलग सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज हैं उन सबको हम डील कर पाए, राइट। सो ये था आपका way forward. I hope that whatever today we have discussed, very, very important, and I think everything is clear to you. Still, if you have any question, then feel free to ask me. And this report, periodic labor force survey report, is very important for the upcoming examination. Either it is prelims, mains, or interview. Okay, so thank you. Bye bye.